So friends, welcome to the series of Vote OnChain project review. अगला जो topic है that is the white paper of this project. You can see the white paper available on the bottom most section of the website. जैसे आप यहाँ पे click करेंगे then you can see the white paper which is in the PDF format and ये जो PDF है 10 pages long PDF format में white paper available है. You can see the contents on this white paper which are introduction section, opportunity, platform, how it works, token, staking, roadmap and disclaimer. So these are sections available on this white paper. You can see the introduction part of this project. You can also check out the opportunity as well, platform details, how it works. You can how to stake to vote and how to vote to earn and tokenomics and the native currency is LHINU. तो इसका जो project का native token है that is LHINU. You can see the native token over here. So इसका जो tokenomics है that is divided into two categories. First category is the pre-sale and the second category is the listing process. So 90% उन्होंने allocate किया हुआ pre-sale process को, जो भी आप pre-sale में purchase करते हो before the listing process. So 90% of the tokens are at the pre-sale and खाली 10% रखा है listing process के लिए and for the liquidity. Next is the staking process of this platform and next is the roadmap. So अगर roadmap की बात करें so we have a roadmap in quarter 1, 2, 3 and 4 in quarter 1 24 onward. So उनका जो roadmap चालू हुआ था that was started in quarter 1 of 23. वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था वाइट पेपर, टोकन लॉन्च, प्री सेल एंड सोशल अकाउंट्स लॉन्च. क्वार्टर 2 में उन्होंने डाला था वोटिंग एल्गोरिथम डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म साइन अप लॉन्चेस, वोटिंग डेमोज शोन टू द पब्लिक, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स एंड एक्सचेंज लिस्टिंग. सो दैट वाज हैपनिंग इन द क्वार्टर 2 ऑफ 23. अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें सो क्वार्टर 3 में उन्होंने अचीव किया LHINU स्टेकिंग लॉन्चेस, मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स, फर्स्ट वोट टू अर्न रिवॉर्ड्स एंड क्वार्टर 4 में उन्होंने अचीव किया LHINU होल्डर्स एबल टू क्रिएट देयर ओन पोल्स, ब्रांड पार्टनरशिप एंड स्पॉन्सर्ड पोल्स एंड ब्रांड स्पॉन्सर्ड रिवॉर्ड मैकेनिज्म. एंड अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें सो उनका जो टारगेट है दैट इज टू इंटीग्रेट वोटिंग सिस्टम इनटू मेजर मेटावर्स एक्सपीरियंसेस. सो दिस इज द एंटायर रोड मैप ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड दे हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन दिस ईयर ओनली, दैट इज फ्रॉम क्वार्टर 1 पीरियड इटसेल्फ. सो इनका जो रोड मैप है दैट इज 5 quarters लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट.